Welcome to Delhi and welcome to our school. आइए Upgraded school, no? Yes, all the schools have been broken and upgraded. Most of them or all 100%. 100%. So ये जो school है, all the schools are like this now. They are better than private Mr. schools. Nama Nageshwar Rao, Namaskar, namaskar. our floor leader in parliament. Very nice. Mr. Reddy, Prashant Reddy is R&D minister there. He is our young MLA, Mr. Anand, Namaskar. Mr. Venkatesh MP, Very nice. Mr. Ranjit Reddy MP, Okay. and his Santosh Kumar is member Rajya Sabha. Kuchand. How many numbers have been upgraded like this? We have roughly 1100 schools all across Delhi. 16 lakh children were there earlier, but now many children are striking their names from the private schools and coming to government schools. So, which now we have 18 lakh children in government schools. Yeah. So our education director will give a small presentation. Today is Saturday, so the kids are not there. We will just show you the take you around and. Summer vacation, sir. Usually in summer vacation we are having here summer camps. That is till 9:30 in the morning. Because youth. Manish Sisodia, Deputy CM. So He's our education director. Sir, on Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Chief Minister of Telangana Shri KCR Rao ji, Honorable Deputy Chief Minister of Delhi Shri Manish Sisodia ji, Honorable MP from TRS Shri NN Rao ji and other MPs from Telangana, and all officials present from Government of Delhi and Telangana. On behalf of the Government of Delhi, we welcome you here in our Government Senior Secondary School, Nanakpura. Sir, it is a privilege to host you here in our school, sir. Sir, we'd just like to give you a brief about today's program. Sir, we will be showing you a small video on Delhi's education journey. Thereafter, there will be a small presentation, sir. Thereafter, sir, we will take you on a round of the school. Sir, since it was on a short notice, we do not have students right now. However, sir, the route will be like, we will be taking you to primary class, then middle class, then we will be taking you to Atal lab, and then we will take you to, sir, our business blasters room where few of our teams are there, sir. Sir, with your presentation, with your permission, sir, if I would like to start the video, sir. आज़ादी के 69 साल। इन 69 सालों में दिल्ली के This was the condition of the schools earlier. जहां लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बद से बदतर होता देखा है हमने। अगर सफाई नहीं होगी स्कूल में तो कंपनी को रोजाना 2000 रुपये का सामान लगेगा, रोजाना एक दिन में। तो हम नहीं करें उसकी वजह से ये सब लोगों के साथ रहो। कोई बच्चा गया कंप्यूटर में? पहले मुझे बताइए कि आपने आज तक कंप्यूटर लैब में किसी दिन बच्चे बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं? झूठ तो बोले थे आपने से कि आपके पास बच्चे आते हैं। राइट समझा? प्रैक्टिकल है? तो प्रैक्टिकल क्लास में बैठ के हो रहा है? क्यों कर रहा है? आप चाहोगे कि आपको बच्चा देंगे? ऐसा वो बच्चा को बुला रहे हैं। वो बच्चे तो अच्छे नहीं चाहोगे। अच्छा टूट पड़े पड़े तो तब कैसे पढ़ पाएंगे? इसका भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप लोगों ने ना एजुकेशनल स्कूल से मजाक मार रखा है। ऊपर यहाँ से वहाँ तक चिन्नी लगा देंगे। तो बिल्कुल नहीं घूमा। सबसे फोटोग्राफी कैसे कॉलेज में किस स्कूल चल रहा है ना? देश का भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यह हर वो फैसिलिटी है जो प्राइवेट में मिलती है और बेशक उससे ज़्यादा।
So now we have all new furniture, all new buildings. Everything has been changed. Every school. Complete change. Now these are the kind of labs. These are now auditoriums. दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दिल्ली के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। Thank you, sir. So we will now take you to the presentation, sir. So what made Delhi education reforms possible? So the most important thing that was there was that 25% of the total state budget has been consistently dedicated to education, sir, from past 6-7 years. Sir, in fact, one more thing that has happened is that in Public Works Department, PWD, a special wing was created specially for education projects. So much funding was given in education that a separate wing was created, and it was ensured that big projects in the number of classrooms were taken in so much of sizes that big clusters were formed, big tenders were done, and that's why so the contractors who came were the class 1 and the better contractors, and they were able to complete the work of good quality. Sir, there is a strong political will, sir, to fix the problems, and it was led by Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister. In fact, sir, during the initial days when construction of schools used to happen, Honorable CM and Deputy CM used to visit the schools so that they fix the benchmarks that the quality of schools should not be compromised at any cost. There is a strong team of educationists, sir, from within and outside the government system which is working on in education department. A new program called Change Maker in Education Fellowship was started, where educationists from across the country and globe were taken in the department, and they are working with the government department in framing policies for bringing curriculum changes and other reforms. Sir, school HOS, this was found that school HOS plays a very important role, the school principal, in overall managing the affairs of the schools. Hence, his powers were increased by more than 10 times, sir, the financial powers of the school principal. So, there is a culture of celebration and recognition in Delhi government. In fact, any positive thing that happens, that is appreciated not only at district level but also at the level of education minister and chief minister, sir. Sir, if you would like to see the results, sir, if we compare in 2014-15, sir, the Delhi government pass percentage in class 12 was 82%, which was well below 88% that was the national average, and 90% that was private school. However, with time, sir, now if you see in 2019-20, the Delhi government's pass percentage has increased to 98%, sir. And in fact, in 2021 and 21-22, sir, it has crossed 99%. It is 99.4%, which is much better than the private schools and the Indian average, sir. So more than 500 students from Delhi government schools have qualified IIT JEE Mains and NEET. Sir, in fact, this year All India rank 8 in EWS and AIMS was also from Delhi government schools, sir. So more than 3 lakh students, 3.7 lakh students from private schools are migrated to Delhi government schools. Sir, these are the 3 curriculum reforms. Melania Trump, the US president's wife, when he was the president, she visited this school. She came to see this school. Sir, Madam Melania Trump. She attended happiness curriculum. 1.5 hours she spent in the happiness class. Sir, this is something which is very new, which is not there in any other part of the country. That 3 new curriculums have been introduced in our government schools, and they are being practiced regularly in schools.
And initially they were in government schools. Now, sir, from this year they are being introduced in private schools also, because they have also now shown interest in adopting them. Sir, happiness curriculum, as has been told, the focus is on emotional resilience among children in a scientific manner. Entrepreneurship mindset curriculum, sir, in this we will be visiting a Business Blasters program that is running, that has come on, that was live telecasted on television also, sir, and it has got a great response. And we have few teams here today, sir. We will be taking you over there. So in this, we are giving seed money to our students to come up with their business ideas and on whatever and experiment that. And we have 3 lakh students in 11th and 12th. So all were given offer. So they made 52,000 groups. So we say they made 52,000 startups. 1 student, some have 4 students, some have 10 students. So all of them came together. 52,000 ideas were brought up. And almost everybody learned something by doing business. And many of them has become successful. They invested, they took, say, there were 10 students, they took 20,000 seed money from us. And they made lakhs of rupees. And then we shortlisted some of the... Yes. So after 1 year of their business, or maybe 6 months of their business, we shortlisted 1,000 business ideas. We presented to the higher authorities, within the department and to some experts. Then out of that we chose 100 ideas. For 100 ideas we invited the investors. And every single kid's business idea actually got invested. Someone got 2 lakhs, someone got 10 lakhs, someone got someone got more than that also. And moreover, we are not leaving it there only. We requested our state universities to create extra seats in their BTech and BBA programs. So now they are getting direct admission. So this Business Blaster program, you meet some of the teams here. This Business Blaster program has become the competition also to get admission into BBA and engineering colleges. We call it Business Blaster. We call it Business Blaster. So business, their minds... So all these kids, none of them are looking for jobs. From 11th class onwards, they've started thinking, what business will I do when I pass out? They all have started thinking that we have to do business after passing out. So we have a daily class of happiness curriculum for nursery to 8. For 9 to 12, we have a daily class of entrepreneurship mindset curriculum. And last to last year, we started Deshbhakti curriculum also. For this also, we have a daily class from nursery to 8, and some part of it is for senior classes. Sir, in Deshbhakti curriculum, we teach, it's more of interactive sort of curriculum where teachers and students, they sit together, they have discussions, and they ask what is Deshbhakti, and students try to answer in their own language what they consider Deshbhakti is. Sir, this is another important area. One was infrastructure. Government invested huge money in infrastructure. The second need was felt was in human resource management and improving the... So we sent all our principals abroad in some or the other country for training. And we sent all our teachers to IIMs for training. So, sir, our teachers were sent not only in India, the best institutes in India like IIMs, but they were also sent abroad like NIE, Singapore, Finland and Cambridge. In fact, sir, in the coming June, 2 of our batches are going to Cambridge again, our HOS batches. Apart from that, sir, we had mentor teacher program. We started few new programs, sir. The idea was that since government has launched so many schemes and so many curriculum reforms, there is a need to handhold all the school teachers and principals. So new programs were launched like mentor teacher program, teacher development coordinator program, cluster leadership development program. And sir, in all these programs regularly, not only at direct as at my level, but at minister's level also, regular feedback and review happens, sir. Sir, our teachers are also applying for Fulbright fellowship, and more than around 30 teachers have got such Fulbright fellowships. In this Fulbright fellowship, they are invited to America. They spend their, I think, 8 weeks? Yes, sir. 8 weeks they spend in their schools and universities, and they learn from them. Sir, this is the next level of reform that now Delhi government is envisaging. First was infrastructure, then teachers training. The third is on the curriculum reform, sir. Right now, sir, there is the focus is much on rote learning.
So now the vision of our education minister is to change that from, and honorable chief minister is to change from rote learning to more on inquiry-based learning. So sir, Delhi Board of School Education has been set up. We have tied up with International Baccalaureate, IB, we have tied up with IB, so that sir, a complete shift is brought in the way assessment is being done. We have also tied up with sir, Australian Council of Education Research, which is considered the best among the assessments, sir. Apart from that, sir, we have started new schools of specialized excellence in 5 domains, sir. That is science, technology and medicine, STEM, humanities, performing visual arts, high-end 21st century skills and armed forces preparatory schools. So these are the schools where new subjects, new courses are being started, curriculum is being developed, sir. Like if I would say, sir, example of performing visual arts, then specific courses developed just for music, just for fine arts, so that a child, if he wants to go in that field, sir, he is able to progress there after from class 12. We are also having, sir, tie-ups with foreign universities, and a lot of partners have come in, sir, for developing this curriculum, like IIT Delhi, Tata Institute of Social Sciences, NIFT and other major players. Sir, so this is it from our side, sir. Now we will go on the visit of the school, sir. Sir, this is a normal Sarvodaya school, sir. Apart from our specialized school, we have normal Sarvodaya school. So this is a normal Sarvodaya school, and it was renovated, sir, and new construction was done in 2018, sir. Come. So this specialized school is from 9 to 12 months. They are generic from bottom. Yeah. चलो सर ये लग के लिए इसको दिखाया था उसको पूरा तोड़ के बनाया। पहले केवल एक ये बिल्डिंग थी, ये टूटी हुई थी, इसको रिनोवेट किया, इसको पूरा तोड़ा। ये वाली सारी नई बनी है बिल्डिंग्स। ऑलमोस्ट सारे स्कूल में ही बने हैं तोड़ के। आगे चलते रहो भैया, आगे चलते रहो। टोटली हाँ नए भी कई बने नहीं। हाँ एक्चुअली दिल्ली में लैंड की प्रॉब्लम है, सो हमने क्या किया कि नए स्कूल की बजाय एग्जिस्टिंग स्कूल्स में नए ब्लॉक्स बना दिए। तो 22,000 न्यू क्लासरूम्स। Additional director, she'll take us to her office. Welcome, sir. आइए This is the room where I'm taking you. Sorry. Media थोड़ा सा कम है। When a student comes to the school, sir, he comes with a lot of emotional values from the homes. So we have created this happiness mindset curriculum. यहाँ पर when the student comes here, they are doing happiness activities and mindfulness activities. So there are soft mattresses. So if the child wants to sit and relax himself, they can relax. If the child wants to have a creative expression to express his energy, he can do that also. If you see those This is pictures, special meditation room. they are During the made day by- also, if a child feels some distress, some tension, he can easily come and sit here. It's a quiet room. whichever form he wants to express himself, he wants to sit quietly, he wants to do yoga, he wants to meditate. The teacher is there to help him out and with these activities, and he can do that. And with that relaxed mind, then he further proceeds to class. In every school this room is there. No, sir, not in every school. This is the principal's creation. So in few schools we have replicated this. Many principals have done their own creations also. These ideas were acquired from where? Happiness kind of thing. Happiness, sir. We have been doing Vipassana, sir asked that we have to make good human beings. So how to do? So this is the answer to that. It's usually people. And idea also evolves. We start with something, then slowly and gradually. So much comes up. So much yeah. Gradually, ये वाली सारी बिल्डिंग नहीं बनी है Totally. टोटली। we'll take you to right, sir.
रीटा जी राइट? So the school was established in 1958, and after that in 2018 the rooms were revamped, and now you see the fantastic building, the very good infrastructure. You'll see दिल्ली में पहले मोस्टली स्कूल टेंट में चलते थे. आज इफ़ यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ and what सर is केजरीवाल सर उस तरफ दान सर बैकग्राउंड स्कूल भी आएगा. अभी जाएंगे उधर. and what is the unique feature about this building is that we have not concretized the whole playground. We have kept kacha spaces also for plantation, so that child knows the importance of ecology and to keep the things green. And there has been a playground also. There are 68 rooms in the building, sir. And the classes 68. And the classes start What is the from, strength of the school? sir, 824. What is the staff now? The staff rooms are also there. And स्टाफ number of staff number is approximately 65, sir. 65. Yeah. And from What nursery is to the ratio, student-teacher ratio you have Sir, found? it has been according to NEP. It's 1:30 for the small classes, and for the upper primary and secondary classes 1:40. it becomes roughly 12, no? 65 teachers, 800 students. Roughly 12. And there are fruit trees also, sir. Jamun trees there, mango trees, and there are flowering trees. Curry patta trees also, sir, so that a student can learn about the medicinal values of it. इधर से जाना. Actually, most important is the looks and the infrastructure. Now the teachers feel like teaching, children feel like studying. पहले तो स्कूल में कोई आना ही नहीं चाहता था बच्चे. टीचर्स को पढ़ाने का मन ही नहीं करता था. This is a nursery room, sir, where you can see that furniture has been specially made and arranged according to Something the like a play school? not sir, it's above place. Above place. After placement. And since new education policy is giving focus on strengthening of foundational learning, so nursery, KG and primary classes have been given special furniture, special teaching learning material, and the teachers have been trained accordingly to use that. And if you can see these can be arranged in a separate manner. These can be like. अभी आपको प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलते कहीं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर. If the teacher wants to organize a play activity in the classroom, we can remove these benches and we can arrange here, and the chairs can be paired accordingly. Children can sit and talk. Storytelling session is there. If they want to enact the story, the teacher is having hand puppets and other things over here, so they can be used and the student can listen to the story. If they want to have a small play session in the classroom, so that can be done. And they can be organized in this way so that together they can sit and color the classroom, color books with them. Special coloring What is the books. medium of language that they are calling? हिंदी and English both Both are. Hindi and English. Largely These in books lower are classes we provided there, prefer. sir, and they are kept in the open racks. And as you can see, there is an open library, the Pulwari, sir, because of very young students, they can fill out the shapes, colors, fruits, and these are kept in the classroom itself, so that student is not burdened with a school bag to carry it home and bring it again. And if you can see over there, sir, this is an open library in the classroom. If the student wants to, hear a particular story, or if some storybook is appealing to the child can pick it up from there. It's arranged according to the height of the child, and the teacher can narrate it to them. So the student will feel connected to the classroom, that it's my classroom, the reach is within my reach. You can see some various expressions are there, sad, happy, so the teacher will like paste it in there. The corridors are specially designed for younger students, sir. If you can see, these are the colorful tiles. So they can touch, they can draw, they can do whatever they want to do, and later on we will just clean it. There are different colors. इस पे वो ड्रॉ कर सकते हैं. Yes, sir. There are different They are allowed colors. to draw. There are different colors, so the color करते हैं recognition is बच्चे. also there. They love, especially दीवार खराब करना ज़्यादा अच्छा लगता है.
And there are, you know, special play area for them because they are very young students, so they generally don't mix up with the older students. And this is an activity room for nursery, KG. You can see the doors up. मतलब पहले टेंट में चलता था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, टॉयलेट्स नहीं थे, कोई लड़की को शिशु आए तो उसको अपने घर जाना पड़ता था। वहाँ से नाउ सी द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए बहुत सारे बच्चे अपने प्राइवेट छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें మనం కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్నిటినే చేస్తున్నాం. వీ హ్యావ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ వన్ ప్రోగ్రామ్. నాట్ లైక్ దిస్ ఉన్నాయి సార్. ఉన్నాయంటే యూ ఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ వర్క్ ఆఫ్ ద స్కూల్ బిల్డింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ద కరికులం we are not touching. We have not touched the curriculum. I just inquired with the management. No, we will interact. We can interact. Yeah, and that we can. yes. Since let's not start from the scratch, we can learn from each other. We can learn from each other. Since this is an activity room, sir, we have lined the floor with these mats. Here, if the child wants to play, they can play. If they fall, they will not be afraid of getting The hurt. best part of the whole program was to send the teachers abroad, Exactly. Yes, sir. to change the mindset and Exactly. reorient them. ఆ రెండు కొత్త కరికులం అండ్ Everything happened. So training is First very year, we gave emphasis only on 4 things. सारे स्कूलों में पीने का पानी होगा, सफाई होगी, टॉयलेट्स ठीक होंगे, सिक्योरिटी होगी। उसके बाद सारी बिल्डिंग्स तोड़ के बनानी शुरू की, तो लोगों को लगने लगा, सबको एनवायरनमेंट अच्छा मिलने लगा। फिर टीचर्स को अब्रॉड भेजना चालू किया। अप टू हियर वी आर टेकिंग अप नाउ सर. अप टू सर ने जो We are in the first phase. वी आर इन द फर्स्ट फेज. आप 4 बात बोले, वी आर टेकिंग इट नाउ. Okay. वी आर डूइंग इट नाउ. It's actually gradual. It can't happen in one It go. cannot हमारा कथा कुछ अलग है ना, हमारा लार्ज नंबर आपका बहुत आपका large सर number. I understand. एरिया बहुत बड़ा है. जैसे अभी वो भगवंत मान आए थे, उनके 22,000 स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है। हमारे 1100 स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन my सेम है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन सीधा, सेम है. क्योंकि छोटे छोटे गांव में भी स्कूल है वहाँ पे। Right. एक स्कूल में 40-40 बच्चे हैं, बस उतने ही। हमारे एक स्कूल में 2-2 हज़ार बच्चे हैं। मतलब हमारा 2000 स्कूल तो हम मानते हैं नॉर्मल है. ये कितना यहाँ पे कितना है? 1000 820 800. तो ये हमारा आपका डेंसिटी ज़्यादा है। हाँ, हमारा डेंसिटी हमारा ज़्यादा है। 3-4 हज़ार वाले हम मानते हैं कि हमारा बड़ा स्कूल है. 4-4 हज़ार बच्चे 25% स्कूल में बैठते हैं, इरिगेशन में बैठते हैं. सर स्पेंड अबाउट 8,000 irrigation. That is a rural. How much money was spent? We have spent 25% budget consistently since day one. राइट नाउ Total budget is का 70,000. Dedicated to education. education. So first year our budget was 30,000 crores. This year it was 70,000 crores. So 25% of You are investing up to what level? we are School level. नो सर, स्कूल एंड कॉलेज दोनों. College up to what level? वी हैव ऑल यूनिवर्सिटीज. Till university. not Yes, really. Budget goes to that also. Yes. So if you can see all the soft toys or whatever activities, musical instruments, whatever they are, they're kept in the open. So the students don't feel agitated and they can play, they can feel connected to the school. And here you can see that there's an alphabet tree. That's it. So the alphabets can be removed. The teacher can ask the child to identify the alphabet and keep it there. So it's a kind of activity-based learning. We are not telling you this is A, this is B, this is C. So we are just involving the child in doing the activity that we What is the total So number of there's teachers in Delhi? Kejriwal ji? कितने टीचर्स हैं टोटल? 60,000. 60,000. 60,000. 60. 60. పదార్వేలు కొత్తోళ్ళు అంటే So కొత్తోళ్ళు there's a, పదార్వేలు. They were actually in the process of Yes, yes. improving the system. అది ఇంగ్లీష్ వచ్చేవాళ్ళని తీసుకోవడానికి ఎక్కువ. అంతకంటే ముందు వచ్చింది. अंतकुमुंदु ఏమీ లేదు. అదే అదే అని. It was a neglected thing. मजदूर लोग भी भागने लगे प्राइवेट स्कूल में. छोटे-छोटे सर वो काम करने कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है सर. वाले। वो एक टाइम का खाना कम भी करके बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। प्राइवेट में प्राइवेट में अब सीनियर एडवोकेट्स दिल्ली में अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के बड़े यहाँ मैं एक क्लास में गया, मैंने एक बच्चे से पूछा, वो बोला मैं प्राइवेट छोड़ के आया। मैंने कहा कौन सा प्राइवेट? सेंट कोलंबस, दैट इज़ द बेस्ट स्कूल इन दिल्ली, सेंट कोलंबस। उसमें एडमिशन लेने के लिए बड़ी सिफा, वो छोड़ के वो स्कूल में आया। इस स्कूल में Just for मैंने एक reference, जगह टीवी पे देखा है। I got a request yesterday only.
from under secretary from the vice president house for admission. एडमिशन His own child. In government. Joint Secretary Government of India wants government school. यूजुअली पहले प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की सिफारिश आती थी, एग्जैक्टली अभी सब गवर्नमेंट स्कूल में सिफारिश कर रहे हैं. So all our classrooms are decorated like that with teaching learning material. For this is a bit senior. That was much junior than KG. This is KG. Nursery KG. So this, if you see the roof of the corridor, it has been cladded And with the. there are CCTV cameras everywhere. वो काम कर रहा है अभी? हाँ, हाँ. हमने हर क्लास में एक CCTV कैमरा लगा दिया और उसका पासवर्ड उसका वो हर पेरेंट को दे दिया. सो ड्यूरिंग वो जब चाहे देख सकता है मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है क्लास के अंदर बैठ के. We are planning to establish a Montessori lab for the very small students, and this is the space we have identified that a Open Montessori lab. open Montessori lab, so that the sensory motor experiences of the child can be harnessed for their proper growth and integrate them into the education process. One is created this recently. Experience with teachers and kids is so good. We have decided that in all school will have gradually. This year we are starting with 100. 6 citizen correct. But early childhood education is one of the most important issues Exactly. India is missing. That's what really develop the aptitude. Everywhere we have CCTV cameras. Be careful of Is the it classroom? So like you can see here, this is bigger classroom. So there should be two CCTV cameras. One is there. That is a CCTV. One is here. So this feed is live. एक ये किया Would be था हमने live. सारे स्कूल्स के सारे डेस्क चेंज कराए थे. पहले बच्चे नीचे बैठते थे तो एक ही किस्म के डेस्क आपको पूरी दिल्ली में मिलेंगे. अब ये सारे बोर्ड्स चेंज करा रहे हैं. ऑल ऑफ देम गोइंग टू बी डिजिटल बोर्ड्स नाउ. All ceiling and lighting కోసం There were allegations. Now there is CCTV. And when they complain, you tell us, we'll check. And the parents can check. ये तो सेम है. चलिए We'll take you to the business blaster. We have requested. Business blaster. We call it business blaster teams. Blaster, no? Yes, sir. Is this blasters program? So you can see the हमारा- corridors have been decorated with colorful tiles also, and these tiles are used for geometrical shape kind of teaching to the students. Like they can count the small tiles and then they can count the colors also. So these are This is some of the sports facilities given in a TT classroom. कैरम बोर्ड In every school. एवरी स्कूल. So some Sports is very innovative smile, like tree has been preserved and that was. But when we came, this was almost all jungle. सरकारी दिस इज अ न्यू ब्लॉक. ये पूरा So न्यू now, ये बिजनेस ब्लास्टर्स है. Sir, we have Atal lab. This is a adult thinking. अच्छा. This is one of the labs. where student work on ये साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए सर. कौन सी क्लास के लिए लैब है मैडम? Bड़ी classes के लिए 9 to 9th 12. 9th onwards. The students have developed a smart dustbin. So it's a sensor here. If you like put the hand, it will open automatically, and you can keep the garbage here without soiling your hands. Made by you. Apart from that, there is a 3D printer also. Here also students print in a 3D. Sir, through business blaster, actually students have explored themselves. We have never imagined that students studying in government. 11वीं और 12वीं क्लास के हर बच्चे को हम 2000 रुपये उसके हाथ में कैश देते हैं और उसको कहते हैं इसे बिजनेस करो.
तो 4 बच्चे साथ आ गए, 5 बच्चे साथ आ गए तो 10,000 रुपये हो गए। चेक स्टार्ट फिर 10,000 से कुछ भी सोच के वो बिज़नेस शुरू करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उस 10,000 रुपये को 6 महीने में 1.5 लाख रुपए बना लिया। कुछ प्रोडक्ट बनाया, व्हाट्सएप करके उसको बेच दिया, फेसबुक पे डाल के उसको बेच दिया। उन बच्चों को फिर हमने बड़े अमीर लोगों से मिलवाया, दे इन्वेस्टेड इन देम। तो अब सारा एनवायरनमेंट जो है पूरे दिल्ली के स्कूलों में वो ये है कि हमें बाहर निकल के बिजनेस करना है, नौकरी कोई नहीं मांग रहा। स्टेप 1 इज मेकिंग देम एंटरप्राइज। यस यस, उनका दिमाग इस तरह से, नो वन इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। हो सकता है फेल हो जाएं, 2,000 रुपये हो सकता है डूब जाए, लेकिन उनका दिमाग चलने चाहिए, सोच ही अलग हो गया। सोच अलग हो गया। सर मैंने एक बच्चे से पूछा, जनरली आई इंटरेक्ट विद देम, आई आस्क्ड देम कि आपके अंदर चेंज क्या है, ये बताओ। ये तो ठीक है आपने 10,000 डाला, 20,000 कमा लिया, दैट इज़ वन थिंग, माइंड में क्या चेंज आया। सो इन सच एन इंटरेक्शन वन ऑफ द स्टूडेंट सेड, सर पहले ना डर लगता था 99% नहीं आए तो क्या होगा, अभी तो टेंशन नहीं है, 60% आ गया तो ज़िंदगी तब भी नौकरी बिजनेस कर लूँगा मैं। नंबर का नहीं है, नंबर का गेम नहीं है, कॉन्फिडेंस है। आइए इधर। They want to photograph of this. these are all the students. Yes sir. Manish ji sir. Manish ji, I'm fine. थैंक यू। What is happiness for you? Yes sir. These are all proving you. Sir, happiness is also one of the wonderful initiatives. पेरेंट्स आर रिपोर्टिंग कि हमारे बच्चे में हम बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं, फैमिली रिलेशनशिप, फोकस। एक्चुअली जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, इतने गरीब बैकग्राउंड से, रिक्शे वाला, मजदूर, उनके घर में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, डिस्ट्रेस होता है, बहुत डिस्ट्रेस होता है। तो वो हैप्पीनेस ने उनके अंदर काफ़ी चेंज लाया बच्चों के अंदर, उनके फैमिली रिलेशंस बहुत इम्प्रूव हुए हैं। यूजुअली व्हाट हैपेंस कि इस तरह इमोशनल वेलबींग के प्रोग्राम्स वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ होते हैं। वी वर रिजिड, नो इट विल बी डेली, सो डेली हैज़ बीन हेल्पिंग अ लॉट। So the whole corridor has been decorated. इधर संस्कृत समिति क्या हो गया? संस्कृत समिति क्या है मनीष? So we have different clubs. अच्छा। We have different clubs in the school. For example, legal literacy club, Sanskrit club, and Punjabi different club, other Eco languages club, yeah, Eco Eco clubs. club. So there the students meet according to their own interests and they discuss activities related to that particular club. यूजुअली व्हाट हैपेंस विद देम व्हेन दे रीच कॉलेजेस, वहाँ पे ये सब क्लब्स बनते हैं, वहाँ गोष्ठ उनका वो चलता है, हम यहीं से इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट दे आर फैमिलियर। For example, you can see the performing art club. विजुअल आर्ट क्लब। नहीं सर, सर्वोदय तो पहले से था। जेपी वाले। हाँ जेपी वाला। सर आइए आगे से आइए सर, आप लोग आगे सर आगे। ये बेसिकली सर हॉल है, तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास, हमारे यहाँ स्पेस बड़ा क्रंच है हर स्कूल में, जहाँ जहाँ भी हमारे पास स्पेस के लिए अच्छे हॉल हैं। मल्टीपल हॉल। यस मल्टीपर्पज़ हॉल। सो ये एयर कंडीशनड हॉल सरकारी स्कूल में कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल काम भी नहीं दे। हाँ ऑल दीज न्यू हॉल्स आर This is the business blaster. इनको दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। ठीक है, इनका ये बिजनेस है। ये बिजनेस इन्होंने बनाया। आप डिटेल में समझाओ कैसे बनाया, कैसे शुरू। Hello sir, Namaste sir. I am Sufi, he is Himanshu and he is Nitin. We are from Government Co-ed Senior Secondary Panjayabasti Nagro School and I am currently representing Mystic Dates. We have created another option instead of chai and coffee.
and this amazing drink contains nutrients, antioxidant, calcium, iron, mineral and many more benefits. It is natural, healthy and tasty, and we have currently generated a revenue of 67,000 rupees, 50,000, 6,700 rupees, and we have a contract of 2 lakh rupees in our hand and currently in progress. तो 10,000 रुपये, 5 लोग थे तुम लोग? Yes, yes sir. 10,000 रुपये से शुरू किया, 50,000 रुपये कमा चुके, 2 2 लाख के ऑर्डर्स हैं और इन्वेस्टमेंट कितना मिला अभी? Investment 17 lakhs. 17 लाख का इन्वेस्टमेंट्स मिल गया इनको। अच्छा, समथिंग लाइक अ पाउडर। Yes. जैसे ये चार ड्रिंक कॉफी होती है, जैसे ये कॉफ़ी जैसे ही टेस्ट करता है। हमारा एम्बिशन है पैन इंडिया और फिर उसके बाद पैन ग्लोबल जाने का। कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। रॉ मटेरियल क्या है इसका? रॉ मटेरियल डेट्स के सीड। डेट्स के सीड्स को पीस के बनाते हैं लोग। तो आप जो 17 लाख रुपए जो आपको इन्वेस्टमेंट मिला ना, यस, तो उसको कितने मुनाफा दिए अब तक? वो तो अभी वो मिलेगा। अभी मिलेगा। मिलेगा। अभी जितना भी हमने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 से किया है। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? आइडिया एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने अपने घर में यूज़ करते थे इसे और उन्होंने फादर को सिखाया और फादर हमारे घर में यूज़ करते आ रहे थे, सो उनसे मैंने सीखकर इसे एक बिजनेस के तौर पे आगे बढ़ाया। And the recipe of this thing is done by you. Yes. The recipe. Yes. The age-old recipe. Congrats, God bless you. Thank you so much, sir. Become a very, very big man to fulfill the ambition of your chief minister. Thank you so much, sir. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? He wants you to पेरेंट्स become a मेरे big businessman. फादर डॉक्टर हैं और मेरी मदर टीचर है। सर मेरे फादर वर्कर हैं और मदर हाउसवाइफ। आपके CNG स्टेशन पे काम करते हैं। सीएनजी स्टेशन में। तो आप पार्टनर से? यस, 2 और होंगे ना, 5 हैं। यस। Thank you so much, sir. Good evening, sir. Myself Wasim, he is Virender. We are from SBB Rao Savini School and we are team Biothin, in which we are manufacturing biodegradable bags which is decomposable in 6 months, and after that it will convert into a fertilizer. Also it is water soluble, and if we will burn it, it will convert into ash, and it is no harmful effect, even animal it will eat. This is made out of what? That's a secret formula. He will not tell you. He will really come up as a big businessman. God bless you. कितने बच्चे हो तुम? 6 members. 12,000। अभी बिकना चालू हो गया? अभी हमारा लाइसेंस जस्ट कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू सर, आपने हमारी हेल्प करी, इन्वेस्टमेंट दिलवाई गवर्नमेंट से? यस सर। So they have got government license also to sell this 1,50,000 because it's a chem product तो। और हमारा जो टेस्टिंग है वो इस मंथ कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने कंपनी फॉर्म कर लिया, बिग ड्रीमर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। Wow. This Biothin. This is the solution to the plastic. Biothin is the name of the product. So they will replace single. Yes sir. This Your brand is Biothin. Product name is Biothin. Biothin is the name of the brand. What is the price of each bag? 1 rupees. 1 रुपये ज़्यादा नहीं है? हम इसके अभी एक्चुअली क्योंकि हमारे मशीनरी नहीं है, तो मशीनरी जब हमारे पास आ जाएगी इसकी प्राइस और कम हो जाएगी। कॉमन प्लास्टिक की जब ज़्यादा बल्क में बनेगा तो प्राइस लो होता जाएगा। अभी बल्क में नहीं बन रहा तो इसलिए प्राइस थोड़ा हाई है। पैसे कमाओ, प्राइसिंग कम नहीं करना। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? Gaming beast. Namaste sir, my name is Keshav and the all market team is Rahul Mathur and Aditya Kumar. We are from Government Coed Senior Secondary School, F Block, विकासपुरी। सर हमारी टीम का नाम है गेमिंग बीस्ट। विकासपुरी सर। हमारी टीम का नाम है गेमिंग बीस्ट और हम लोगों को जो आज की जनरेशन है जो मोबाइल गेम से जुड़ी हुई है, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो आके खेल सकते हैं और अपनी अर्निंग को कई सारे प्राइजेस दे सकते हैं। सर दरअसल एक तरह का ये प्लेटफॉर्म होता है जो 1 हफ्ते तक चलने वाला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है। इसमें जो लोग हैं, जो कंटेस्टेंट है, जो हमारी टारगेट ग्रुप है 25 ईयर से कम, वो हमसे जुड़ती है और अपनी फेवरेट गेम खेल के लास्ट तक विन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वीक 5 डेज तक होता है एंड जो विनर्स होते हैं वो डे बाय डे फाइनल राउंड तक जाते हैं। तो वीडियो गेम टूर्नामेंट्स कराते हो? वीडियो गेम टूर्नामेंट कराते हैं। तो तुमको पैसे कौन देता है? सर जो हमारे कंटेस्टेंट आते हैं वो एंट्री फीस देते हैं हमारी टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए। एंड अभी तक हमने 3 सीज़न कर रखे हैं। फर्स्ट हमने किया था नवंबर में, 2 जनवरी में, 3 फरवरी में किया था। अगर सर मैं आपको इसकी प्रॉफिट के बारे में बताऊं, फर्स्ट हमने टोटल 1,36,000 प्रॉफिट करा है एंड रेवेन्यू 4.86 किया है। तीनों सीज़न का मैं अगर डिवाइड करूं तो इसका
फर्स्ट सीजन में हमने 48,000 प्रॉफिट किया था, सेकंड सीजन में 38,000 एंड थर्ड सीजन में 50,000। कितने लोग हो आप? 4 लोग। सर हम टोटल जब हमने स्टार्ट किया था 5 मेंबर्स थे, हमारे पास टोटल 10,000 की सीड मनी थी एंड इसके अलावा भी हम हमारी टीम में और लोग जुड़ रहे हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं। इन्वेस्टमेंट मिला उधर इन्वेस्टर्स मीट में? इन्वेस्टर्स से हमें कई सारे इन्वेस्टर मिले, बहुत सारे, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भी हुई। अभी जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट मिल गई? अभी से कमिट कितना किया उन्होंने? उन्होंने 40 लाख। 40 लाख? हमारी रिक्वायरमेंट तो बता नहीं रहे हो अभी इन्वेस्टमेंट फाइनल नहीं हुआ, कंपनी अभी रजिस्ट्रेशन होगी, देन वो सब फाइनल होगा। कमिटमेंट्स हैं एकेडमिक्स सर, इनको हम क्योंकि स्कूल से निकल के क्या करना चाहते हो? सो बिजनेस में मेरा जो मेन इंटरेस्ट है, मैं बचपन से ही बिजनेसमैन बनने का है, और क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ बड़े बड़े लोगों को, एलॉन मस्क और टाटा सर, ये सब, तो वो मेरी एक तरह से इंस्पिरेशन है। मुझे एक तरह से एलॉन मस्क बनना है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे फादर की एक मिल्क एजेंसी है, वो मिल्क सप्लायर है। आपके? मेरे पापा बर्गर बेचते हैं। आपके? मेरे ब्रदर टेलर है। आप टेलर हैं? ब्रदर टेलर है, फादर नहीं है? फादर एक्सपायर। आपके? सर मेरे पापा फैक्ट्री में वर्क करते हैं जो कन्वेयर बेल्ट बनता है। अच्छा। ऐसे इससे हमारे कई कमिंग सारे फ्रॉम profit वेरी हैं। हम्बल बैकग्राउंड एंड दे आर सर लाइक। इसके बाद हमारे एक फ्यूचर विजन भी है। अभी हम सिर्फ 4 गेम तक सीमित हैं। अब इसके बाद हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम 20+ मोर गेम्स को ला सकते हैं, और जिससे हमारा रेवेन्यू और बड़ा हो सके। बहुत अच्छा, सो प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। अच्छा है, थैंक यू। तो एक साहब को दो। अभी हम जो खुद की डिज़ाइन है, जो सॉफ्टवेयर, थैंक यू भाई। अभी तो सर हम वेबसाइट से अभी अपनी अर्निंग एक इनको डाल दो, अपने बैग में डाल दो इसको। पैसे दे दिया। आपको पैसा मिला इसका? यस सर, हाँ दे दिया। अच्छा, किसने? आपने दिया? थैंक यू। वन बैग एक बैग और हो गया। थैंक यू। ठीक है, आइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू What are the other activities undertaken in this hall? इस हॉल में तो काफ़ी सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ ये होता रहता है, कुछ कुछ जो भी उनका मास रीड होगा। जो भी मास एक्टिविटीज़ स्कूल की होती हैं, असेंबली, ये वो। Previously, this kind of thing used to be there in जिला परिषद हाई स्कूल, सर रूरल एरियाज। कई जगह शेड होता था, सीमेंट बिल्डिंग है, तो इस मात्रा में नहीं, इसमें आधा तो हार नहीं सकता। सर वो डिपेंड्स कि कहाँ खत्म हो कितना गया। स्पेस है हमारे। देखें ना, अभी बच्चों को सुन रहे, इफ़ यू मेक दम रियली एंटरप्राइजिंग, काफ़ी मात्रा में, मतलब सर जॉब सीकर्स कम होते चले जाएंगे, जॉब प्रोवाइडर्स। नौकरी ढूंढने वाले नहीं बचेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इट इज। और अभी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि पढ़ लिख के BA BCom फिर रोड पे आ जाते हैं, फिर पता नहीं क्या नौकरी करें। ढूंढते हैं तो फिर कहाँ से आएंगे? सर करिकुलम एंड दिस एंटरप्राइज बाहर कर लो। इधर ही कर लो, लो। बाकी सब लोग। नहीं, आप आपको ऐसा करना चाहिए, अंदर है नहीं, आपको ऐसा करना सर चाहिए। अपने और लोग हैं? साउथ में कोई नहीं है। ठीक है, सर you have to do one thing. What they have done is they have sent their teachers to abroad. Now, because of their effort, that kind of knowledge is very much available here. Your education director, along with some officers concerned with this, shall come, share with them, and how these things can be replicated in your area. Is the point. It is essential. That's very very important. सर आज दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल विजिट किया आपने, बच्चों से इंटरेक्ट किया, बिजनेस ब्लास्टर से, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? बिजनेस ब्लास्टर ही नहीं, ये पूरा माइंड बोगलिंग है। सरकारी स्कूल इस तरीके से डेवलप होना शायद ही देश में पहली बार है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नतीजा मिला। कई अन्य चीज़ों के अलावा जो बिजनेस ब्लास्टर करिकुलम इन्होंने लाया है, उसमें बच्चे एंटरप्राइजिंग हो रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, जॉब सीकर के अलावा वो जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं। ये हमारे जैसा बड़ा आबादी रखने वाला देश के लिए बहुत ही ये अच्छा है। मैं दिल्ली सरकार को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम है। हमने भी तेलंगाना राज्य में, जो हमारे तेलुगु भाषा में कहते हैं, अपना गांव अपना पाठशाला, हमने शुरू किया है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ सुधार दें। लेकिन जो यहाँ से सीखने को हमको मिल रहा है, ज्ञान कहीं भी किसी के टेके में नहीं होता। जो लोग प्रयास करके उससे प्राप्त करते हैं, दूसरे लोग जहाँ प्राप्ति हो सकती है वहाँ से प्राप्त करना चाहिए।
अब हम ये सोच रहे हैं इसको देखने के बाद में डेफिनेटली हमारे मंत्री जी भी है, प्रशांत रेड्डी जी हमारे साथ हैं, वो PWD का मिनिस्टर है। जिस प्रकार के ये बिल्डिंग सुंदर सी बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और करिकुलम भी जो कम्प्लीटली चेंज हुआ है, विद्यार्थियों का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम ज़रूर दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे CM साहब से कि हमारे अधिकारियों को यहाँ भेजेंगे, जो भी ओरिएंटेशन यहाँ से प्राप्त हो सकता है हम ले लेंगे और इनको भी ऑफिसर्स को भी वहाँ ले जाके बताएंगे कि किस प्रकार से अच्छा ये डेवलप किया जा सकता है। अभी सर जिस तरह से पॉलिटिक्स की भी बातें हो रही है, आम आदमी पार्टी और CM अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे कि हम एजुकेशन को मुद्दा बना रहे हैं पॉलिटिक्स का, आपको लगता है अभी के समय में और जब आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है ये मुद्दा ऐसा है, पॉलिटिक्स कुछ और चीज़ है, जिस पवित्र जगह में हम लोग खड़े हैं नहीं उसको बाहर ही बात करना ठीक है। एजुकेशन पॉलिटिक्स का मुद्दा बन रहा है। नहीं